perfect, but our nails can be, right? Can you imagine after Holi what happens to these nails? They become so bad. इतने कलर्स उसमें आ जाते हैं, कलर्स अंदर तक चले जाते हैं, क्यूटिकल्स पे कलर हो जाता है एंड दे स्टार्ट टू लुक शैबी. इनफैक्ट उन कलर्स की वजह से नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं और टूटने लगते हैं. So in today's video, I'm gonna tell you how you can take care of your beautiful nails before you step out to play Holi. So let's begin. So I know we go for manicures, apply beautiful colors on our nails in our daily life, but no one goes for a manicure before Holi. हमें पता होता है होली के टाइम हमारे nails की क्या बुरी हालत होने वाली है. So what you can do is just include 2 easy steps in your pre-Holi nail care routine. Now what is this? The very first step is to apply this argan oil. It's Calabar Earth C7 argan oil and it's very essential and very helpful for your nails. All you have to do is just take some amount of it from this pump bottle on your palm, in fact on your fingertips, and just gently massage on your nails like this on both your hands. बस इस तरह से हल्के हल्के हाथों से एक थोड़ी देर के लिए बस मसाज करनी है सो दैट जो नेल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बन सके, एक्स्ट्रा शाइन इनमें ऐड हो सके, जो क्यूटिकल्स हैं वो भी उनको भी स्ट्रेंथ मिले और इजीली आपके नेल्स ना टूटने पाए, ना इनको नुकसान पहुंचने पाए उन केमिकल्स से या जो कलर गुलाल आपके हाथों पे लगने वाला है. बिकॉज ऑफ कोर्स व्हाइल यू अप्लाइंग गुलाल टू अदर्स यू आर यूजिंग योर हैंड्स और उन्हीं फिर गंदे हाथों से आपको बाद में खाना भी खाना है. यू हैव टू शेक हैंड्स विद अदर्स and it looks very embarrassing, trust me. Now why I personally love this particular argan oil from Calabar, because it has a mixture of so many oils. It has sesame oil, walnut oil, jojoba oil, almond oil, and of course argan oil as mentioned. That means all the good nutrients from all these oils are gonna get into your nails and it's very necessary and very important. In fact, it is mentioned here that you can use it on your skin, hair and nails, but I definitely use it on my nails because I don't want them to suffer, especially during Holi. Now the next step is to use a top coat. Now this is also from Calabar. This is Sun Genius top coat. I anyway use Calabar nail paints because I love them. इनका stay बहुत अच्छा है, quick dry होती हैं. So similarly I use their top coat as well. In fact normal daily life में nail paint के ऊपर भी top coat I apply to give extra shine. But especially during Holi, I don't want all those colors, those gulal to get into my nails या मेरे nails का रंग बदल जाए, येलो येलो वो दिखने लगे. I don't want that. That's why I always use this top coat. I apply it on my nails and in fact थोड़ा सा nails के अंदर यहाँ nail bed पे भी I apply so that nails के अंदर color ना जाए, मेरे cuticles भी protected रहें and of course extra shine add हो रही है तो there is no harm in that. And the best part of this Calabar top coat is this is Sun Genius. That means कि sunlight पड़ते ही ये जो top coat है ये जेल में बदल जाता है. ऐसा नहीं कि कोई thin layer रह जाएगी जैसे nail paints की thin layer रह जाती है. It converts into a gel जिसकी वजह से एक अच्छी layer covered हो जाते हैं आपके nails और उस वजह से जो गुलाल है, colors हैं वो nails में नहीं जाने पाता. And the best part is बहुत क्विक ड्राई है सो जल्दी सूख जाता है एंड वन कोट इज इनफ. यू डोंट नीड टू अप्लाई इट अगेन एंड अगेन. वन कोट इज इनफ and I can see my nails are already shiny and I know they are healthy because पहले मैंने मसाज की है, then I have applied the top coat, so my nails are perfectly protected. So yeah, that's the small simple routine you have to follow before you step out to play Holi so that your nails can be protected. And that's it for this video. I hope you liked this video and I hope you have a great happy Holi. So now I will see you later in another video. Till then you keep watching Foxy and stay fab, stay foxy. Bye bye.